Yes, I welcome you in the 8th class chapter of Geography, Minerals and Power Resources. In this chapter, students, we are going to discuss about the topics that are minerals, extractions of minerals, world distribution of minerals in India, conservation of minerals, power and energy resources, conservation of power and energy. And today we are going to discuss about the definition of minerals and एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स। खनिज क्या हैं और खनिज को कैसे निकाला जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट अस सी। फर्स्ट इज दैट इज मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ क्रस्ट। एवरीथिंग वी यूज और कंज्यूम हैव मिनरल्स इन दैम। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के धरातल में क्रस्ट में पाए जाते हैं। एवरीथिंग वी यूज और कंज्यूम, जो भी हम चीज़ प्रयोग करते हैं या कंज्यूम करते हैं, हैव मिनरल्स इन दैम, उनमें मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग द सॉल्ट, यू आर यूजिंग द पेंसिल, यू आर यूजिंग द बल्ब्स, दैट इज द टंगस्टन, it is also mineral. Salt is also mineral. It means we use or consume in our daily life all have minerals. About 2800 minerals have been identified so far. They are concentrated mostly in particular rock formations. ये मोस्टली रॉक्स में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। Some of these minerals are easily accessible as they are soluble in sea water. इनमें से कुछ जो खनिज हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं बिकॉज दीज आर सॉल्युबल इन द सी वाटर। इस समुद्र के पानी में घुल जाते हैं। Some are economically expensive to obtain or inaccessible as they are lying under the thick layers of ice in Antarctica, in the Himalayas or in the Arctic region. कुछ मिनरल्स जो हैं इकोनॉमिकल एक्सपेंसिव है, महंगे होते हैं आर्थिक रूप से, बिकॉज वी कांट ऑब्टेन इजिली बिकॉज दे आर लॉइंग अंडर द थिक लेयर्स ऑफ आइस इन एंटार्क्टिका, क्योंकि वो एंटार्क्टिका में बर्फ़ के थिक लेयर्स में जो है रखे हुए हैं, हिमालय में है या फिर आर्कटिक रीजन में है। दैट्स वाई वी कैन नॉट गेट इट इजली। सो दीज आर नॉट एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मीन्स हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। आफ्टर दैट, सी नाउ what is the difference between the metallic and non-metallic minerals? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट इज सी मेटेलिक मिनरल्स। दे कैन बी मेल्टेड टू obtain new products. We can get by melting new products from the metallic, and they are generally obtained with the igneous rocks. ये हमें igneous rock से मिलते हैं। You know student, there are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic, and metallic minerals are found in the igneous rocks. For example, iron, bauxite, tin, manganese, lead, copper, silver, gold, zinc. These are the example of the metallic minerals. Now let us see what are the non-metallic minerals. They do not yield products on melting. They did not give new products on melting. पिघलाने पर हमें कोई इनसे नया पदार्थ नहीं मिलता है। They are derived from sedimentary rocks, as metallic rocks are derived from igneous rocks and these are derived from sedimentary rocks. ये हमें sedimentary rocks से मिलते हैं। For example, mica, uranium, phosphorus, clay, salt, marble, limestone, gypsum, etc. These are the example of the non-metallic minerals.
Now this is the flow chart of that mineral. Mineral divided into metallic and non-metallic. After that, metallic is divided into ferrous and non-ferrous. Ferrous means which contains iron, and non-ferrous means which does not contain iron. Now see the flow chart of the extraction of mineral. There are three procedures for extraction of minerals. First is mining, second drilling, third is quarrying. Okay, there are three procedure for extraction of minerals: mining, drilling, and quarrying. Further, mining is divided into two: open cast and shaft mining. So let us discuss in detail about that. Types of minerals. As I have told you earlier, there are two types of minerals: non-metallic and metallic. Ferrous and non-ferrous. Ferrous contains iron and non-ferrous contains no iron. We have discussed already the example of these. Now let us see how minerals are extracted. जो खनिज हैं वो कैसे निकाले जाते हैं. As there is a flow chart, there are three methods. First is mining. The process of extracting minerals sources from under the earth crust surface is called mining. What is mining? The process of extracting minerals resources under the earth crust is mining, which is carried out in various stages. कई stages में जाता है. Let us see. There are two types of mining: open cast and shaft mining. There are two types of mining: open cast and shaft mining. Now students, see what is the difference between them: open cast and shaft mining. Open cast means that only it is found by removing the surface layer of the earth. अगर हम अर्थ की सरफेस लेयर को हटा देते हैं, we can get minerals. This is called the open cast. But for shaft, what is the difference? For shaft, deep bore scarred shafts are dug deep inside the earth. When deep bores are dug deep inside the earth, it is called the shaft mining. इसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं जब हम गहराई तक पृथ्वी में जाते हैं टू फाइंड आउट द मिनरल्स को फाइंड आउट करने के लिए. These examples are like diamonds, manganese occur in the great depth of the, and coal is mined by both open cast and shaft mining. कोल एक ऐसा जो है खनिज पदार्थ है जो ओपन कास्ट से भी निकाला जाता है और शाफ्ट माइनिंग से निकाला जाता है. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोल. कोल की कैसी क्वालिटी है और वो कहाँ पाया जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट. नेक्स्ट वन इज ड्रिलिंग. Drilling means deep wells are bored to extract minerals like petroleum and natural gas. This method is used to extract natural gas and petroleum, which occur in the great depth of oceanic surface and on oceanic beds. ये जो oceanic surface के great depth में पाए जाते हैं. So drilling of oil on the ocean bed is called the offshore drilling. Underline this also. Drilling of oil on the ocean bed is called offshore drilling. Next one is quarrying. Next one is quarrying. This is the process of obtaining minerals near the earth by simply digging out or by breaking rocks. This is the process of obtaining minerals simply digging out or breaking rocks on the earth.
is called quarrying. सरफेस पर सिंपली जो है डिगिंग आउट करने से और रॉक्स को तोड़ने से जो हमें इजली अवेलेबल हो जाते हैं, दैट इज मेथड इज क्वेरिंग. So in this way we have come to know that there are three processes of extraction of minerals. तीन विधियां हैं जिसके द्वारा हम खनिज को निकाल सकते हैं पृथ्वी के सरफेस में से. फर्स्ट इज माइनिंग, second is drilling, third is quarrying, and further mining is divided into open cast and shaft mining. So students, in this way you have come to know about the definition of minerals and how these are extracted from the earth. Thank you.